नमस्कार, आप सबका स्वागत है. वेलकम टू द next edition, the third edition of the Practitioner Connect sessions, this time on a Wednesday. It's great to have you all join us. अलग अलग शहरों से काफ़ी सारी टीम्स ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं. पिछले आधे घंटे से हम देख रहे हैं कि टीम्स जो हैं लगातार ज्वाइन कर रही हैं. अपने शहरों से कंसल्टेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं. It's great to see the level of participation and very excited for today's session. काफ़ी सारे हमारे participants जो हैं हमें पहले भी join कर चुके हैं इन Practitioner Connect sessions पे. आज के session के लिए फिर मैं एक बार जो है हमारे user experience को दोहराऊंगी. I will just walk us all through the UI that has been created as a part of this very engaging and interactive format by the Bloomberg Philanthropies team on behalf of the Ministry of Urban Development. What you will be seeing is a video. The video is surrounded by 4 applications, as we all know, those of us who have been joining the sessions. जो पहला application है जो आपके screen में आपको नज़र आएगा वो है प्रश्नों का, questions. ये application आपको allow करता है किसी भी तरह का आपका प्रश्न हो जब हमारे experts बात कर रहे हैं उनके विचारों के द्वारा. अगर आपको कोई विचार आता है, आप share करना चाहते हैं, you want to share a thought or a suggestion, इस क्वेश्चन वाले एरिया में डालिएगा. इसका एक छोटा सा कैरेक्टर लिमिट है जो आपको नजर आएगा, लेकिन उसके साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या लैंडलाइन नंबर, अगर आप चाहते हैं कि आपको हम कॉल करें और आप अपना प्रश्न डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से पूछें. सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू वांट टू कॉल इन, make sure that you've included your phone number and we will try and call you in. उसके अलावा आप देखेंगे कि ट्विटर का एक फीड भी यहाँ पर लाइव है. हमारा हैशटैग है स्मार्ट सिटीज चैलेंज, हैशटैग स्मार्ट सिटीज चैलेंज. कोई भी इस हैशटैग को लेके अभी फिलहाल ट्वीट करेगा तो उनके ट्वीट्स यहाँ पर नजर आएंगे. आप उसके द्वारा भी अपने कमेंट्स, सजेशंस, इनपुट्स और क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं. अगर आप लोग काफ़ी लोग एक कमरे में बैठे हैं और आपके पास आपका कंप्यूटर थोड़ा सा दूर है तो शायद ट्विटर के द्वारा आप भेजेंगे, जरूर भेजिएगा. डू सेंड अस थ्रू ट्विटर एज वेल. वी आर क्यूरेटिंग एंड मॉनिटरिंग दैट ऑल्सो. उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास एक पोल का सेक्शन है. पोल का सेक्शन फिलहाल ऑलरेडी लाइव है, उस पर एक हाईलाइट भी आपको नजर आएगा. पहला पोल का क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी है. आज का सेशन सिटीजन एंगेजमेंट पे है और हम जानना चाहते हैं कितने सारे शहर ऑलरेडी सिटीजन एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं. इफ यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व, गिव अस अ क्विक इनपुट ऑन आवर पोल क्वेश्चन. द लास्ट एप्लीकेशन ऑन योर स्क्रीन इज अ डाउनलोड सेक्शन. पिछले हमारे 2 जो हमारे सेशंस थे उनमें पावर पॉइंट्स यूज हुए थे, वो पावर पॉइंट्स डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल थे. इस बार का सेशन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा चर्चा, ज़्यादा इंटरैक्शन, तो अभी फिलहाल डाउनलोड में कुछ अवेलेबल नहीं है. बट दैट इज द सेक्शन इन केस वी डू हैव समथिंग टू शेयर ड्यूरिंग द सेशन, इट विल कम अप. ये सब रिसोर्सेज स्मार्ट सिटीज़ के जो वेबसाइट है उसमें अवेलेबल रहते हैं सेशन ख़त्म होने के बाद भी. सो यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड ट्राई एंड access these resources. All the questions that we pick up are pulled in. We have a limited amount of time, so we curate and we pick a few questions to ask our expert, but we don't lose all the other questions, and we hope to be able to get further responses and convert those into inputs as we go forward. So welcome you all of you once again. जैसे मैंने कहा, आज का हमारा सेशन जो है वो सिटीजन एंगेजमेंट में पे फोकस करता है. सिटीजन एंगेजमेंट हम देख रहे हैं कि ये जो बहुत एक अहम पहलू है स्मार्ट सिटी के प्रपोजल का. बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारे शहर ऑलरेडी इसमें एंगेज कर रहे हैं. माई गव का जो प्लेटफॉर्म है स्पेशली बहुत यूटिलाइज हो रहा है, एंड इट्स ग्रेट टू सी हाउ सिटीज़ आर बीइंग एबल टू लीवरेज दैट. ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रपोजल्स कि जो असेसमेंट है उस असेसमेंट में ये एक अहम किरदार प्ले करेगा. आप कितना एंगेजमेंट सिटीज़ ने किया है, किस तरह से किया है, क्या इनोवेटिव किया है. तो इसको हाईलाइट करने के लिए शायद मैं आपसे आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करना चाहूँगी. Of the 98 cities that are in this in this competition right now, 96 cities have already used MyGov as a platform for discussions, polls, and being able to run competitions on it, which is really exciting. Bhopal, for example, has received
110,000 1,10,000 कमेंट्स भोपाल ने रिसीव किए हैं उनके माई गव एंगेजमेंट के द्वारा। उसके अगला है इंदौर, जिसने 1,06,000 कमेंट्स रिसीव किए हैं अपने सिटीजन से। दैट्स ग्रेट टू नो। हम ये भी देख रहे हैं कि केरला में कांकीनाड का जो शहर है, उन्होंने 8,000 ऐसे सबमिशंस रिसीव किए हैं। कांकीनाड has received 8,000 essay submissions for their writing competition that came in from their citizens. सूरत के शहर में हमने देखा है कि वहाँ पर 2 कॉम्पिटिशन्स माई गव के प्लेटफॉर्म पे चले हैं ऑलरेडी, और करीब 8,600 इनपुट्स सूरत के शहर ने रिसीव किए हैं। पसीघाट में भी 6 कॉम्पिटिशन्स माई गव के प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, जिनमें 2,000 से अधिक आइडियाज रिसीव हुई हैं। हल्दिया ने 3 पोल्स भी रन किए हैं माई गव पे, जिससे 40,000 रिस्पॉन्सेज सिटीजन से निकल के आए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जिस तरह से शहर माई गव के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियरली सिटीजन एंगेजमेंट has picked up a lot of pace. There's a high degree of momentum. There are a few weeks left for the smart city proposal to be finalized, and therefore this is really the topic of today's conversation. इसके साथ मैं हमारे आज के एक्सपर्ट को इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर कौस्तुव कांति बंदोपाध्याय, जो डायरेक्टर हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया में। बहुत ही रिच एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, बोथ सोशल अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज गवर्नेंस, इन सब एरियाज में उन्होंने बहुत ही diverse काम किया है, and we hope to be able to hear from him and have cities engage in today's session with him. So with that, I'm going to invite Dr. Kaustuv to join us for today's session with his opening remarks. Hello, Kaustuv. Thank you, Parvati, and good afternoon to everyone. This is a terrific privilege for me to interact with so many city leaders on an initiative which has the potential to change the urban face of India forever. As Parvati mentioned, let me start with an acknowledgement of the fact that this is for the first time in India's urban history. We can see an unprecedented momentum and enthusiasm among citizens to participate in cities' visioning and planning to make their cities smart. To my mind, this has been possible because of 2 reasons. One is, of course, a tone on optimism and hope has been set up by the highest leadership of our country, the Prime Minister, Mr. Modi. The imperative to engage citizens in preparing Indian cities for the 21st century has been largely guided by the policy and guidelines for Smart Cities mission. And the second reason is, unlike many other previous initiatives, the cities this time have also embraced the call for citizen engagement in a much more serious and earnest manner. It is therefore not surprising to see a barrage of innovations that are already being tried out in various cities, even within their limited resources. Just to cite a few examples, along with what Parvati has mentioned, using MyGov portal, cities are recruiting young volunteers from colleges and universities, talking to people in malls and bazaars and public spaces, asking school students to write essays or draw paintings on Dream City, opening up online communications through a variety of platforms, including social media. And as you can see, there have been almost 1.47 million members of MyGov. And these people are pouring in their suggestions, ideas to the cities. And all these are unprecedented and must be acknowledged and respected and encouraged. Let me now focus on the first question. Why it is important to keep an open line of communication with the citizens? Or simply, why citizen engagement? I can offer
three compelling and practical reasons. The first one is very obvious. When we used to attend our management classes, there was a game called Win as Much as You Can, which means I'm referring to the smart cities competition. You can score a maximum of 16 points if we pay much more attention to the civic engagement part. The second reason perhaps is more profound, and let me see how many of you can agree with me if I say the collective capacities and knowledge of citizens are several times greater than the existing capacities of municipalities. This is fact that our cities, our municipalities, they lack resources, they lack technical capacities at this moment, but even within those resources, some of the things that they have tried must be acknowledged. Now, if you look at the number of professionals, for example, engineers, doctors, architects, management executives, painters, singers, athletes, sports persons, those who are living in the city and working in the city. What if we are able to mobilize even a fraction of these capacities, even a fraction of these capacities to the advantage of cities' improvement and well-being? Yes, perhaps some cities could be more blessed than the others. Out of these 98 cities, perhaps the metro cities and other bigger cities may attract more talents, but that's the reality. Continuing with my second point, if I ask who has the best knowledge about the existing problems and needs of the city, it's with all citizens from each sector of the society, whether they live in middle-class colonies, whether they live in slums, they have the knowledge about the cities. All is needed an enabling and fostering ecosystem where these professionals and ordinary citizens feel valued by the city administration. The third reason is also very compelling, and I would say it helps reducing the risk. Let's look at the unfinished and stalled infrastructure development projects, not only in and around the cities, but also throughout the country. You may perhaps agree with me that a large number of these projects were stalled or disrupted because one or the other kinds of citizen discontent or lack of support. Let me underline this as boldly as possible that stakeholders management, citizen engagement, talking to people is not a fashion or a cosmetic affairs, but an integral part of smart management of the city. Effective citizen engagement and consultations can enhance citizens' ownership, and you can garner support for these projects and thereby can reduce significant amount of risk of a future of failure in the city. Thinking about the importance of keeping your stakeholders' engagement, let us now focus on what methods could be employed to keep communication lines open, or simply how do we create an environment which is conducive for the citizenship. I can suggest three factors to consider. One, keep citizens informed. Why? Because information is key to the citizen participation. The quality of participation depends on the quality of information they receive or they generate themselves. People often refer to as transparency, but let me put it in a simple manner. We must tell people what are we up to, what are we planning to do, and what are we expecting people to do. And I would underline this last sentence, what are we expecting people to do? We must tell people. The more clearly and authentically we tell this to the people, the lesser the chances of receiving or, so to speak, construing misinformation, which often leads to negative participation.
Now, many a times we invite citizens without giving the context, without giving prior information. And therefore, what we receive many a times is not relevant. So in order to preempt that, perhaps our major effort should be to inform people, providing authentic information. My second point is very simple. What we need, a genuine willingness to talk and listen to the people. It requires on our part an authentic recognition and belief that people have the capacity and knowledge which could be useful for the betterment of the city to fulfilling the mandate of the municipalities. The third thing which is important is organized citizenry. When citizens have their organizations, such as resident welfare associations or Mahalla Samitis or slum committees or association of professionals like, Indian medical associations, their city chapters, traders associations, one can expect an organized voice. And perhaps at this moment, we may not have area sabha or we may not have ward sabha, but with these existing institutions, we still can garner organized voice of the citizens. Let me finish this part of this conversation by adding a question that what are the most effective ways to engage citizens? So as I underlined that, there are 4 elements to it. One is informing the citizens, consulting the citizens, and then after consulting, identifying citizens' priorities. And that's not the end of the story. We need to feed back to the citizens about the decisions made and why those decisions are made. So when we say citizens, perhaps we need to also look at who are these citizens. It's not a homogeneous group. So we have individuals who can come from middle class, who can come from slums. This could be men, this could be women, there could be disabled people, there could be young people, old people, students, children. Not necessarily everyone would like to have same kind of dream about their city. So we need to take into account who are we talking to. So let me stop here for a moment and see what are the kind of questions, and if you have any comments, I'll be happy to take those questions and comments. And perhaps I must acknowledge once again that the tremendous amount of efforts that the city leaderships are making in different cities. It must be recognized, and the rich experience that you are already harvesting, that could be a useful information, useful message, useful exercise, which can be used by other cities as well. Remember that out of almost 4,500 cities, only 98 cities are placed with smart cities competition. So there are numerous cities who can also use your experience in future. So Parvati, let me stop here, and perhaps we take some questions. Kaustuv, I think that was very interesting and engaging, and thank you for summarizing as well, because I think one of the key points that you made there about authentic information being shared, and then you've underlined that with the 4 aspects that you're talking about, informing, consulting, including that into the priorities, and then very importantly feeding back as to the final decisions that are taken, which closes the loop. I'm just going to, we're looking at some of the questions that are coming in. I'm going to take in one question that's come in through the dashboard, also maybe one from Twitter, and then we're also going to try and line up the Smart City team from Pune on the phone line because they have a question as well. So one question that's come in through our dashboard, like you shared, teams should be doing a lot of the sabhas and
gathering information, but teams are also using a lot of the online facilities and and input methods to be able to capture input. So one question that's there is, huge data has been collected through the citizen consultation processes at different platforms. How can cities best analyze this data to be used effectively in their proposals, and what's the method to be able to analyze and do that? Perhaps method and approach to being able to do that. That's one question, and I will maybe share one more question, and then you could hopefully respond to both. The second question is coming in through Twitter, which is, how important is it to engage senior citizens in building the smart city? Okay. I think this is an important question in a way that with our all enthusiasm, we started talking to people. Perhaps we didn't even anticipate this overwhelming response from the citizens. But if we become slightly organized and plan a bit rigorously, that when we receive this information, what are we going to do about all of this? And this is perhaps required at least some kind of categorization. So I have a couple of points in mind. One is, of course, around the theme or around the issues. And those thematic issues or development priorities, that should be in a way understood within the scope of the Smart Cities mission. Now, anything and everything that citizens have asked so far perhaps would not be possible to include in the Smart City proposal. So there is a guideline, there are sort of priority areas already identified within the guideline. So we need to keep our focus as per the guideline. And this information must be shared with the citizens. That whatever sort of expectation, needs, dream that you have shared with us, this needs to be within the framework of the Smart Cities mission guideline. So first of all is, which priority? Is it water? Is it street safety? Whether it is footpath, whether it is electricity, all those need to be categorized as per the guidelines of the Smart City proposal. Perhaps what is also required a little bit more analysis of a particular sector along the line of certain concrete metrics. So for example, we did a survey in a couple of cities and found that the access to water is okay, but the quality of water, perhaps, citizens are not very satisfied with that. Now, if we add certain parameters like access, quantity, quality, continuity, or affordability of certain services, then we can go further into a particular theme or particular issue. So the second form of categorization is to be around certain concrete metrics of a particular issue. The third sort of perhaps categorization can be done by asking the question that whose priority, and that is also linked to the question of senior citizens, that who is saying water is important, who is saying streets are important, footpath are important, or housing is important, whatever. So I can offer certain categories around which you can ask this question and answer this question, whose priority. And this is not necessarily a men versus women, but perhaps we need to bring the issues of gender here. Is this men's priority? Is this women's priority? Is this children's priority? Young, adult, old people's priority? Is this the priority of the middle class? Is this the priority of slums, of urban poor? Is this the priority of the residents, or is this the priority of the commercial offices or business centers? So we need to categorize according to, so to speak, what we call constituency, and in a way we create a matrix of constituency around which we see that who is saying what is the priority. And perhaps the fourth category could be where is this priority coming from? One could be the locality
which kind of locality, and or whether the priority is pan-city or coming from a particular periphery of the city or the center of the city. So some kind of geographical categorization is also very helpful. So let me summarize what I have said. I say that categorization need to be done around the issues or theme, around certain metrics, hard metrics, the indicators that we can use, and constituency, and fourth is the geographical locations. And let me just conclude by saying that, yes, the priorities of the senior citizens must be looked into, because cities are getting complex, there are safety issues, there are health issues, so our cities must be catered to the needs of the senior people. Thank you, Kaustuv. I think one key takeaway as I was hearing you is this, whole thought around a matrix of constituents, matrix of constituents and constituencies, and that as a whole thinking process for being able to prioritize, pick the data and the feedback that is coming in, and create sort of a framework, for each city to create a framework around that. We have Surbhi Shukla from the Smart City team in Pune, who's been lined up and who's ready to, she has a question for you from the Smart City team that is sitting and watching the session today. I'm going to try and bring her on a phone line and to ask the question. Hi Surbhi, I hope you're able to hear me. Yes, hi. Hi. Go ahead and share your question. Sure. First of all, I'd like to wish everyone a very happy Diwali from the Pune Smart City team, and thanks to Mr. Kaustuv and Bloomberg Philanthropy for organizing this for us. My question is this. Given smart cities is a very new concept in India, and most of the citizens haven't even heard or seen something like this before. While we are in the last leg of the citizen engagement process and we have a proposal in place which we are gradually building, how do we try to get support of citizens for this proposal? How do we ensure that citizens trust us on what we are saying and give us, what they're trying to collect as a pledge, right? How do we really get citizens to truly trust us to develop something like this? The question therefore being around trust and being able to build trust with citizens even as they're reaching out and doing outreach. Thank you, Surbhi. Over to you, Kaustuv. Well, first of all, there's as I said, that informed citizens can participate in a much better manner. Now, if we keep on using the jargon smart city, perhaps that does not tell the entirety of the story. There are different aspects of smart cities, and even you have been asking citizens that what is your definition of smart city? The moment we are, it also depends on how we ask questions, what we ask to the citizens. So when certain things are clarified, and what we call demystification of jargons and demystification of information, information can say many things, information can hide many things. So what kind of questions are we asking? How are we asking this question? And giving a kind of particular context and giving clarification to the citizens perhaps would help to understand what is smart city. And as has been said, that there is no single definition of smart city. Each city can come up with their own definition of smart cities. And when I say cities will come up their own definition of smart city, perhaps we are referring to the citizens of the city. So let them define their smart city. So we can provide only those information which we have received, say from the smart cities guideline, that these are the priority areas identified, and every project, every program has a contour, boundary. It can't be boundaryless. So that must be explained to the citizens. And the question of trust is, in a way, it is a good start.
it is a good start. It's a kind of, as I said, that this is an unprecedented experience for the citizens. This is an unprecedented experience for the cities. Let it continue. Let it continue. It's a first round of, it's amazing to see that 1 lakh plus citizens have contributed their ideas. Never before in the history of India's urban development, in urban growth. So we must acknowledge that and continue with this effort. And if we, it's a kind of, if you imagine a ever-enlarging concentric circle, that we started with a core and then we keep on enlarging this. And that is the way I would say that, trust must be seen and built, as I said that when we come up with ideas, when we make a decision, if we explain that the rationale behind these decisions and why certain suggestions were not included in that, that is very important. Otherwise, people will feel that, oh, we gave our suggestions, koi sunta nahi. So that feeling must not come. And that feeling perhaps comes, when we do not provide adequate explanation to the people, the boundary of the project, the limitation of the project. People are not irrational. They would understand if we explain. So my sort of, response would be like this. तो जो आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली द पॉइंट दैट यू आर शेयरिंग इज, एक तो वी हैवंट सीन दिस लेवल ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट कम इन, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, यू आर वेरी राइटली शेयरिंग, एक्साइटिंग टू सी. इट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू कंटिन्यू एंड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ, जैसे आप कह रहे हैं. दूसरा जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया वो ये कि अगर मतलब स्मार्ट सिटीज़ प्रपोजल्स के कुछ गाइडलाइंस हैं, तो वो गाइडलाइंस ऑटोमेटिकली एक फ्रेमवर्क बन जाते हैं जिसके दायरे के अंदर हम करंटली जो फीडबैक आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो दैट शुड आल्सो बी अ क्राइटेरिया. Kaustuv, I'm going to share 2 questions that are coming in through the Twitter feed, and then perhaps we'll go into some specific challenges. But एक question जो आ रहा है फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी से, वो ये है कि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में हम स्मार्ट सिटीजन किस तरह से डिफाइन करते हैं. स्मार्ट सिटीजन अर्बन कॉन्टेक्स्ट में कौन होते हैं? क्या उसके लिए कोई एक डेफिनेशन है, प्रोफाइल है, उसका आपका थॉट क्या रहेगा? दूसरा जो प्रश्न आ रहा है वो ये है कि जिन शहरों में इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है, पहले हमने बात की जहां पर बहुत सारा ऑनलाइन फीडबैक आया है, लेकिन ऐसे काफ़ी शहर हैं जहां पर इंटरनेट का पेनिट्रेशन कम है, तो उन शहरों में सिटीजन्स तक कैसे पहुंचा जाए, उनका फीडबैक कैसे लिया जाए? सो 2 क्वेश्चंस ऑन दैट. पर मेरे ख्याल में स्मार्ट सिटीजन सबको ही है, पर बात यह है कि 2 चीज़ें हैं हमारे यहाँ. कभी कभी राइट्स ऑफ सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हम एम्फेसिस करते हैं, हालांकि सिटीजन्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. तो राइट्स, स्मार्ट सिटीजन वही कहलाएगा जो अपनी राइट्स को समझते हैं और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं. और हमारे जो एक कल्चर है बचपन से, सरकार माई बाप की जो एक कल्चर है कि एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. But the concept of self-help, the concept of citizens' action, concept of collective, collectively seeking solutions, these are not practiced in our citizenry. So I would imagine that when citizens come together, think about an issue, engage with, in this case, municipality, but this could be any other government department around the problems of a city, the problems of the neighborhood. Those are smart citizens. But there are several examples where civil society organizations, community-based organizations, they have come together, tried to find out solutions. They have constructively engaged with the local governance institutions, both in urban context and in rural context of India, not only in our country, but all over the world. People have tried to bring out their own solutions, where government or departments have provided a role of facilitator. They have facilitated this process. They have, in a way, removed the barrier of participation.
So that's the role of the state. It's not that state will always provide water. The state will always provide other necessities of life. There are certain things, certain groups who certainly require special attention from the government, special attention from the public support. But citizens have the ability to bring out solutions. The question of internet, availability of internet is a real one, and irrespective of the fact that the digital divide is very much there, the effort is to overcome that. There are many ways. If you look at the telephone density, that can be used as an alternative to internet. Mobile phone density is very much in certain cities. So my point is that the city has to work to their advantage, whatever is available. And typically what happens in smaller cities, people would prefer to talk face to face. And that's a part of culture. In our Indian context, the most preferred point is that people talk to face. So it's sometimes time consuming. It sometimes it requires a lot of effort. But the alternative is to go for workshops, seminars, meetings at the local level, at the pan-city level, inviting different stakeholders in the meeting. But before inviting different stakeholders in one meeting, perhaps it would be required to talk to different stakeholders differently and then bring them together. Because what has happened in our context, that it's not very common where doctors, engineers, management professionals, and slum dwellers, men, women, children, and their parents are talking together about a public problem. They may talk about their private problem in private, but it's not a very common practice here. So bringing all these stakeholders together would require some amount of preparation for each stakeholder group, and then bringing them together would be much more meaningful dialogue. Because let's not assume that everybody has one aspiration, or everybody has kind of built-in consensus prior to coming to any face-to-face meeting. So that needs to be facilitated a bit more. So the alternative is to go for telephone, alternative is to go for mobile connection, alternative is to go for face-to-face. थैंक यू कौस्तुभ. मैं एक छोटा सा पॉज लेना चाहूँगी इस पॉइंट पे, क्योंकि जो हमारा अगला सेक्शन ऑफ डिस्कशन है कौस्तुभ जी के साथ, दैट इज़ फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक चैलेंजेस दैट यू मे बी हैविंग एज यू रीच आउट टू सिटीजन्स इन योर सिटीज़ एज इन द बिल्ड अप टू द स्मार्ट सिटी प्रपोजल. तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा. हमारे क्वेश्चन वाले फीड में डाल सकते हैं, ट्विटर से भी हमारे पास भेज सकते हैं. प्लीज़ शेयर इनपुट्स. हाउ आर यू एंगेजिंग सिटीजन्स इन योर सिटी राइट नाउ? इफ यू कैन हाईलाइट that will be great. Also share with us perhaps one key challenge that your city is facing, the municipal team that is working on citizen engagement may be facing in being able to absorb or reach out as part of the citizen engagement process. So one key challenge, perhaps one highlight of how you're doing it. इसको लेके अगर आप थोड़े से inputs हमें भेज सकते हैं, वो हम inputs अगले section में लेंगे कौस्तुभ जी के साथ. But while we do that, while we hear back from you on these 2 points, I'm going to take one more thought that has come in from the Twitter handle Smart City MT online. उनका प्रश्न जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर रही हूँ कि अभी फ़िलहाल तो बहुत एनर्जी है इसमें, सिटी की टीम्स भी बहुत मोटिवेटेड हैं और आउटरीच बहुत हो रहा है इनपुट के लिए, लेकिन इसको जारी कैसे रखा जाए? प्रपोजल सबमिट होने के बाद हाउ डू वी मेक दिस अ होलिस्टिक एंड अ लॉन्गर टर्म प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट एंड व्हाट शुड बी अ मेथड टू प्लान फॉर दैट? ये प्रश्न और इसके बाद हम थोड़े से कौस्तुभ जी प्रश्न लेंगे स्पेसिफिकली सिटीज से. ओवर टू यू. Should I answer this question first? Yes, please. Okay. I mean, it's a question of sustaining and institutionalizing in a way citizen participation in the functioning of municipalities, the functioning of city planning. And that's where I would emphasize the
the question of organized citizen. Now, at this moment, individual citizens are participating mostly. It's not that people are coming with their organizations. It's a question of creating some kind of social infrastructure where citizens on an ongoing basis are able to come together, deliberate on the issues, deliberate on solutions, and keep on engaging with the municipalities and other city authorities. So if I may say that resident welfare associations or professional associations, in a way, within the existing limited capacities of municipalities, it will not be possible for municipalities alone to continue and sustain this momentum. It has to be owned by the citizens. It has to be around certain programs. There is no end to problem, citizens in their own localities can participate, continue to engage with the municipal councillors, continue to engage with the frontline government officials. What is required is a two-way process where citizens are heard, citizens provide solutions, but then they also get response from the municipalities. So if that two-way communication is kept open, perhaps the sustainability of this initiative, sustainability of this momentum would continue. But I must underline that some kind of social infrastructure must be there in order to sustain and institutionalize citizen participation. Nowhere, you can continue with lakhs of people will participate every day. It's not possible. It's not possible. It's around a campaign. So it has to be, there will be high moments and there will be some sort of, mediocre moment where people would come and discuss things, but then you occasionally need to bring some campaigns mode interventions. थैंक यू कौस्तुभ जी. आई थिंक जैसे आप शेयर कर रहे हैं कि क्लियरली इसके लिए एक प्लान की ज़रूरत है और इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मोमेंटम ऑफ कैंपेन बना रहे. जब कैंपेन की ज़रूरत है तो उसको रिपीटेड करना चाहिए बिकॉज दैट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू कलेक्ट, और उसके लिए एक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, वो अपने आप नहीं होगा. Before we get on to some of the other questions, because we are now starting to see questions come in specifically around challenges and highlights, I would like to hand it to you, Kaustuv, for your second set of remarks before we take in the next set of questions. I mean, we have already started talking about the how part of it, as things have been shared. We can see that people are already using a lot of methods, techniques, and tactics for citizen participation. Now, in the beginning, I said that we need to inform people and then we consult people. We cannot go into the consultation mode without informing the people. So what are the best ways to inform people? And it's a question that we have been asking for so many times or for so many years. So I would go with first the traditional, offline methods, and then I'll come to the online methods, which are sort of, has created new opportunities for informing people. So of course, one is many cities have already done that, but advertising on newspaper, maximum citizen outreach, explaining the process. This could be a bit expensive given the sort of media requirement, but it's still very effective. Dissemination of IC materials, large-scale dissemination of IC materials like brochure, newsletters, backgrounders, which can provide more detailed information to the targeted audiences. And if these materials are prepared in local languages, nothing like that. So it has to be in local languages. Using news release, or making press conferences, arranging press conferences
where you can sort of organize structured media interaction, whether it is print media, whether it is television, whether it is FM or AM radio. These would provide large public audiences. In some of our campaigns, we have also used, in smaller cities, we have these cable operators. So we can talk to the cable operators and they can also feed this information in between telecasting various programs. Short messaging through banners, kind of static messaging like banners, flyers, bulletin boards, exhibits, all these can be arranged throughout the cities. Another thing is that, we love theaters, we love folk, mediums. So using folk media, concert, theaters, and those artists are there in the city. So inviting them to be part of this campaign, and perhaps many of them would come and join. And sometimes it could be a kind of local area-specific campaign, and sometimes it could be city-specific campaign. Now, on the online, there are sort of plenty of tools. Particularly, I'm referring to social media platforms, or toll-free numbers, or city helplines. Many municipalities already have their helplines. So if you can have toll-free number messages, so interactive voice system, all those are possibilities to provide information. Now, many of these techniques can also be used in the consultation process. So, as I mentioned, that where there is a kind of dearth of internet connection, or the internet connectivity is not so popular or available, one of the options is to go for workshop meetings, consultation, face-to-face workshop meeting consultations. And again, this could be at the local level, or bringing different stakeholders at the city level. And of course, there are advantages and disadvantages of doing this kind of work. It provides, the advantages are like, it provides opportunities for detailed discussion on a variety of issues. So you don't have to restrict for 1 minute message or half a minute message, but you can discuss it more details. It also builds a relationship. It's like human nature. When you come face to face, we build different kind of relationship. And the other advantage is that citizens are given an open forum to have their voice. But of course, the disadvantages are like it requires a lot of time, it requires resources to organize, and it may have sort of limited outreach. You can't have 1 lakh people attending one workshop. It will be maximum 100, 200, 300. Even if you have an open forum, maximum 1,000 people. But still, it's sort of the number would be lower as compared to what is possible through online. Surveys, door-to-door surveys could be an option. For example, perhaps I don't know whether someone is from Ajmer, Varanasi, or Jabalpur in the audience. We did a survey, what we call service level benchmark connect survey. So it's a kind of comparing citizens' experience of what they receive. Basically, the survey was done on water and sanitation services, and it was sort of geared to collect citizens' feedback on the services that they receive, and those experiences were then compared with the service level benchmark report that cities provided to the central government. And this door-to-door survey using mobile technology helped us to go to a large number of households. So unlike traditional surveys where 300, 400, 500 households were surveyed, this mobile-based survey helped us to go outreach, for example, almost 10,000 households in Varanasi, almost 6,000 households in Jabalpur.
So these door-to-door surveys are also, in a way, a process and technique where you can bring new information and maybe very from a targeted audience. There could be seminars, symposiums. So these are sort of more dense kind of issues. Online interaction, as I said, that I mean, you have mentioned about MyGov. It's a tremendous achievement where so many people have participated in from so many cities. Using WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, more interactive online methods, all these can be used in a constructive manner. As we've been speaking, we've been getting a series of questions coming through. I think we already have a caller online as well with a live question already ready. अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे प्राचीन शहर है पासीघाट से ज्वाइन कर रहे हैं हमें दीपक शिंदे जी, जो वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर है. आई थिंक ही इज ऑन लाइन विद अस एंड ही हैज अ थॉट एंड अ चैलेंज टू शेयर. Hello, Mr. Shinde. Hello. Thank you for calling in and go ahead and please share your question with Kaustuv. हाँ, मैं दीपक शिंदे बोल रहा हूँ, म्यूनिसिपल कमिश्नर पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिटीजन की जो डिमांड है या प्रायोरिटीज है एंड दे आर डिफरेंट देन द फ्रेमवर्क ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, तो उसको अगर अकोमोडेट नहीं कर सकते तो उसको कन्विंस कैसे करें सिटीजनरी को कि दैट कैन लीड टू डिमोरलाइजेशन. इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे जैसे फ्लड सिचुएशन का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, डिजास्टर होता है हर साल में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ प्रायोरिटी सारे सिटीजन की. बट अगर वो मैं एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में अकोमोडेट नहीं कर सकता हूँ तो मैं उनको नेक्स्ट राउंड ऑफ सिटीजन कंसल्टेशन में कैसे कन्विंस करूँ ताकि वो डिमोरलाइज ना हो एंड दे विल स्टिल सपोर्ट मी इन द नेक्स्ट राउंड. दीपक जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको ये सवाल पूछने के लिए. हमने थोड़ा बहुत तो इस सवाल को पहले डिस्कस किया है, पर कहने का ये मतलब है कि जब हम सिटीजन से सजेशन मांगते हैं या उनकी सुझाव मांगते हैं तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट को डिमिस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है. उनको अगर हम शुरू से बोले कि जो स्मार्ट सिटीज की गाइडलाइंस है उसमें ये 10 चीज़ों को रखा गया है, उसके अराउंड हमें सजेशंस चाहिए, तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है फ्लड सिचुएशन का. पर मैं इसकी टेक्निकलिटीज में जाना नहीं चाहूँगा इस डिस्कशन में, पर ड्रेनेज सिस्टम की बात हो सकती है. समहाउ आप एक या दो जो पॉसिबिलिटीज है उसको अगर एक्सप्लोर करें, जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है हमारे शहर में, वो इसके प्रावधान है, तो उस तरह की चीज़ों को हम रख सकते हैं. पर आपकी जो ख्याल है कि सिटीजन्स की बातों को अगर नहीं रखा जाए तो वो नाराज हो जाएंगे और आगे चल के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये एकदम सही बात है. और हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लिमिटेशन क्या है. और एक स्मार्ट सिटीज मिशन ही लास्ट प्रोजेक्ट या लास्ट प्रोग्राम आपके शहर में नहीं है. काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स की जो रेगुलर फंक्शनिंग है म्यूनिसिपैलिटीज़ की उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए. और कम से कम ये हमें एक मौका देता है कि सिटीजन्स के साथ बात करके हमें पता चला है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनका क्या सोच है सिटी के बारे में, उनका क्या नीड है. तो आगे चल के जो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे तो उसको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे. बट ये बात बोलना ज़रूरी है. हम अगर छुप के बैठ जाएंगे और बताएंगे नहीं तो उनको लगेगा देखिए हमको पूछा तो है, हमने बोला भी था पर उन्होंने कुछ किया नहीं है, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम बोलने के बाद क्या हो रहा है, हमको तो कुछ पता नहीं है. तो इस तरह की माहौल हम नहीं बनाए, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें.
एक जो प्रश्न इसी में जुड़ता हुआ आ रहा है फरीदाबाद से, वो भी इसी टॉपिक को थोड़ा सा टच करता है, लेकिन मेक्स इट स्लाइटली ब्रॉडर, विच इज़ दैट वन बिग चैलेंज इज टू ट्राई एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स एंड मे बी परहैप्स हेल्प देम अंडरस्टैंड कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, कि किस तरह से एक तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसके अलावा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, काफ़ी हद उसके वो पहलू हैं। हाउ टू बी एबल टू कम्युनिकेट दैट, वो है फरीदाबाद का क्वेश्चन जो हमें ट्विटर से आया है। ये सही बात है कि स्मार्ट सॉल्यूशंस की जो बात हो रहा है, जो इसमें जो टेक्निकल साइट्स जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे कि इसकी सस्टेनेबिलिटी की कैसे लाया जाए और क्यों लाया जाए। पर आमतौर पर एज ए सिटीजन मैं समझता हूं कि हमारी कंजम्पशन जो हो रहा है वो कंजम्पशन सस्टेनेबल नहीं है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी इतना कंज्यूम कर रहा हूं जो कि आज तो मिलेगा पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं मिलेगा, या उस नेक्स्ट जनरेशन में उसके लिए दिक्कतें होंगे, या हम जो शॉर्टकट सॉल्यूशंस हम निकालेंगे, कोई रास्ते का सलूशन या कोई सिवारेज का सलूशन या कोई वाटर सप्लाई की सलूशन, वो मैं सिंपल उदाहरण देता हूं कि अगर हम ट्यूबवेल से पानी खींचेंगे और खींचते चलेंगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर जो सिचुएशन है वो डिटोरिएट करेगा। तो ये तो आजकल एनवायरमेंटल एजुकेशन की पार्ट भी होने लगे हैं और लोग भी समझने लगे हैं, पर उनकी ज़रूरतें उस समझ से ज़्यादा हो गया है और वो जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में लगे हुए हैं। तो एक तरह से हमारी भूमिका ये भी है एक सिटीजन एडुकेटर के रूप में कि ये इसी को शायद सिविक एडुकेशन कहते हैं कि भाई हम अपनी जो समस्या है उस समस्या के बारे में आज भी नहीं सोचे आज की सोल्यूशन, पर कल की सोल्यूशन के लिए भी सोचे और लगातार ये सोल्यूशन लागू रहे। तो पार्ट ऑफ द एडुकेशन, पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इज आल्सो अराउंड दिस एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। तो जो आई थिंक जो मूल निकल के आ रहा है वो क्लियरली आई थिंक है कि वन इज ऑफ कोर्स गोइंग बैक टू द पॉइंट दैट यू वर मेकिंग अर्लियर कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए और किस तरह से इंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन को एक्चुअली फुलफिल किया जाए। इन योर अर्लियर कमेंट्स यू आल्सो टुक अस बैक वेरी राइटली सो आल्सो इन टर्म्स ऑफ सेइंग दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे रेगुलर चैनल्स हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, वर्नैक्युलर, इन सब चीज़ों को किस तरह से यूज़ किया जाए। शायद क्योंकि डिजिटल का आज ज़माना है, हम लोग कभी कभी जैसे लोकल थिएटर पर्सन्स फॉर एग्जांपल को शायद ना यूज कर रहे हों, कुछ सिटीज यूज भी कर रही हों। इट विल बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम दैट। जो हमें लग रहा है कि जो कौस्तुभ का जो इंटरनेट फीड है वो थोड़ा सा डाउन है अभी फिलहाल, तो हम 1 मिनट वेट करेंगे उनको वापस आने तक। तब तक हम देखेंगे कि ऐसे कोई और क्वेश्चंस हों जो हमारे टीम से आए हैं। एक क्वेश्चन जो आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिटीजन से, वो है हाउ डू सिटीज स्ट्राइक अ बैलेंस between forward-looking futuristic planning and citizens' inertia to change। एक फ्यूचर फॉरवर्ड प्लानिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन सिटीजन शायद चेंज ना करना चाहें क्योंकि वो अपने ही एग्जिस्टिंग सिस्टम से काफ़ी आदी हैं। किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा ट्विटर पे आज। और कौस्तुभ जी, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके क्लोजिंग रिमार्क्स भी आप कंटिन्यू करें। ये भी पिछले सवाल के साथ ही जुड़ा हुआ है। कई सारे जो सस्टेनेबिलिटी की सवाल है वो भी फ्यूचर लुकिंग ही है। आज के तारीख में जो हम डिसीजन लेंगे उसकी इम्प्लीकेशन कल होगी। तो ये जो सोच है, इस सोच सिटीजन्स में भी लाने की ज़रूरत है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है एज कंपेयर टू मी। Some of the issues that young people brings in, they are amazingly forward looking। तो हमारे एक सोच है कि जो हम यंग लोग हैं सिटी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करें। कभी कभी हो सकता है कि एडल्ट्स या जो ओल्ड लोग हैं
पुरानी सोच के साथ रहते हैं तो नई सोच लाने में उनको दिक्कत है। पर ये भी पॉसिबल है कि उनके साथ अगर बातचीत किया जाए, उनको अगर समझाया जाए, उनको अगर इंफॉर्मेशन दिया जाए तो वो भी बदलते हैं। तो पहला जो पायनियर जो होंगे, जो अगुवाई करेगा, वो है मेरे ख्याल में यंग लोगों को लाना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज से आए, चाहे वो यूनिवर्सिटी से आए, या यूथ क्लब से जुड़े हुए जो लोग हैं, दे कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ चेंजेस। हमारी अपनी जो इंटरवेंशंस है शहर में, अपने उसमें यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, चाहे वो जेंडर के मुद्दे पे हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे पे हो, चाहे वो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ने की बात हो। दे हैव लिटिल स्टीरियोटाइप, तो हमारे जैसे स्टीरियोटाइप नहीं है, तो यंग लोगों में स्टीरियोटाइप नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। तो ये आगे बढ़ने की जो सोच है, उस सोच को मेरे ख्याल में हमें कैपिटलाइज करना चाहिए और उन्हीं को अगुवाई करने के लिए बोलना चाहिए और मौका भी देना चाहिए। बिल्कुल। हमें एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है अगरतला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकें। तब तक मैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कौस्तुभ जी कि एक प्रश्न है जो आउटस्टैंडिंग है, हम चाहते हैं कि हम अगर हो सके तो उनको फ़ोन पे ले सकें, लेकिन योर थॉट्स ऑन सॉर्ट ऑफ समराइजिंग द सेशन टुडे एंड सम की टेकअवेज दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट for the teams that are watching us at this point of time? सबसे पहले तो जिस बात से मैंने शुरू किया था उसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि इतनी कम समय में, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारी सिटीज़ और सिटी की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं, वी मस्ट एक्नॉलेज दैट। और मैं पिछले 20 साल से शहरी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और जो हमारी सिटीज़ की जो कमियां हैं वो हमें पता है, उनको कितना कम सपोर्ट मिला है ये भी हमें पता है। फिर भी ये जो उन्होंने प्रयास किया है अपने अपने शहर में सिटीजन को जोड़ना और उनके लिए सोचना और उनके लिए समस्याओं की हल ढूंढने का जो काम जो एक साथ हो रहा है, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। साथ साथ ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस प्रयास को आगे भी बढ़ाना चाहिए और सिटी में एक माहौल ऐसा बने कि हर एक बात में सिटीजन्स should not hesitate to come to the city administration or municipality, and municipal administration should also not hesitate to come to the city for their suggestions, ideas, help. तो एक बात ये निकल कर आ रहा है। दूसरी बात जो निकल कर आ रहा है कि इंफॉर्मेशन देना और ऑथेंटिक ढंग से देना और उसको एक्सप्लेन करने का, ये कभी कभी हम लोग ये बोल देते हमने बोला तो था, लेकिन ये बात शायद सिटीजन्स को समझ में नहीं आए। तो एक बार नहीं, बार बार बोलना, इसको रिपीट करना, ये कम्युनिकेशन की चैनल को ओपन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने डिस्कस किया है कि जितनी बढ़िया ढंग से और जितनी बेहतरीन ढंग से हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे लोगों को, उतना ही बेहतरीन सुझाव और उनकी सहयोग हमें मिलने की उम्मीद होगी। और जहां हमें मौका है वहां हम ऑनलाइन टेक्निक्स की प्रयोग करें, जहां मौका उतना अच्छा नहीं है वहां हम पुरानी जो तरीके हैं उसकी प्रयोग करें। बात कुल मिलके ये बनता है कि हमारी इच्छा है लोगों से बात करने का और लोगों की बात सुनने का। ये जब एटीट्यूड हमारे में आएगा और सिटीजन्स में भी आएंगे तो एक बेहतरीन शहर अपने आप बनेंगे। आज ना बने कल बनेगा, लेकिन इसकी जो हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को चालू रखना चाहिए।
कौस्तुभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन को क्लोज करते हुए हमारे पास 2 प्रश्न हैं जो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। आज का सेशन का महत्व यही था कि हम इंटरेक्शन कर सकें, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई एंड टेक देम। एक जो है वो हमें अगेन स्मार्ट सिटी के हैंडल ट्विटर से आया है, स्मार्ट सिटी एमपी के हैंडल से आया है। ऐसे कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स का सजेशन प्लीज शेयर कीजिए जो सिटीज़ रेफर कर सकती हैं सिटीजन एंगेजमेंट के मुद्दे पर। दैट्स वन क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो अगरतला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से है। उनके टीम मेंबर वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं जो हमारे लाइन पे ऑलरेडी अब अवेलेबल हैं। मे बी विल टेक दैट क्वेश्चन एज वेल। हाय। Hi. Hi, welcome Yes. for joining in. If you could just briefly share your name and then अपना प्रश्न भी पूछेगा. Okay. This is Chandan Sinha. Actually, we are from Smart City Cell, Agartala Municipal Corporation. And my question is, we are at the stage of area-based development strategy, and we have various discussion sessions regarding profiting renewal and cities. The problem is there are many options, and we are very difficult situation to finalize. Very conflicting to accept all areas for the renewal and redevelopment. So how we will convince the people which is going to finalize is suitable for the city development strategy? प्रश्न इंटरेस्टिंग है कि सब एरिया डेवलपमेंट मतलब सब रिन्यूअल चाहते हैं, लेकिन काफ़ी एरियाज़ में एरिया डेवलपमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। और पहला वाला हमारा प्रश्न था रिलेटेड टू एन इंटरनेशनल एग्जाम्पल। ये 2 हमारे आखिरी प्रश्न आज के लिए। कौस्तुभ जी। बहुत सारे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। आपने भी किसी लोगों ने सुना होगा ब्राज़ील की पार्टिसिपेटरी बजटिंग जो पोर्टो एलेग्रे शहर से शुरू हुआ था, जहां 1% ऑफ रिसोर्सेस म्यूनिसिपैलिटी उसको रख देते हैं। जिस परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेस को सिटीजन तय करते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, और उस प्रायोरिटीज को फंडिंग करने के लिए, उसकी रिसोर्सिंग करने के लिए वो रिसोर्स की उपयोग होता है। इसके बारे में आप अगर इंटरनेट में ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेगा। पार्टिसिपेटरी बजटिंग पोर्टो एलेग्रे में जो एक छोटा शहर से शुरू हुआ था, बाद में जाके ब्राज़ील के कई शहरों में ये पार्टिसिपेटरी बजटिंग की एक्सरसाइज लेके गया है। लैटिन अमेरिका की कई शहर ने उसको अडॉप्ट किया है, और रिसेंटली 2013-14 में इवन यूएस के कई सारे शहर में इस पार्टिसिपेटरी बजटिंग को रखा गया है। न्यूयॉर्क शहर में हुआ है, शिकागो शहर में हुआ है, कई सारे यूएस के शहर में भी पार्टिसिपेटरी बजटिंग को अपनाया गया है। तो एक तरह से ये उम्मीद की बात है कि जो एग्जाम्पल्स डेवलपिंग कंट्रीज से निकल आ रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी ले रहा है। ऐसे कोई हमें कॉपी हमेशा डेवलप्ड कंट्री से ही लाना पड़ेगा, ये बात नहीं है। सेकेंड बात ये है कि मैं अपनी एग्जाम्पल सिटीजन एंगेजमेंट के पास ही रखूंगा। हमारे कई सारे संगठन यूएस में काम कर रहे हैं, और वहाँ भी टाउन हॉल की प्रयोग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं उसको करने के लिए। एक जो ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स मेथड जो है, जिसको वो कहते हैं टेक्स्ट एंड टॉक, so it's basically you create a group of people, use WhatsApp, you mail each other a question, a kind of generative question, and then you come together and discuss face to face, and then you broadcast that solution to other group members. So it's a combination of offline online method जो कि बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के बीच में, और वो अपनी मोहल्ले की बात करते हैं, अपनी लोकेलिटी की बात करते हैं। तीसरा जो एक सिटीजन एंगेजमेंट की जो मैं बात करूंगा वो है कि इंडोनेशिया में कई शहर में एक तो है कि उनकी जो सिटीजन एंगेजमेंट की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत ही प्रोग्रेसिव है। उनकी जो
म्यूनिसिपल एक्ट है उसको अगर देखें तो उसमें दो तरीका की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। एक तो है कि जो शहर में रहने वाले डिफरेंट सेक्टोरल ग्रुप्स है उनकी पार्टिसिपेशन की भी बात करते हैं, और वो लोकल लेवल पे एरिया सभा टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी बात करते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। वहाँ एरिया सभा बना हुआ है, एरिया सभा रेगुलर बैठक करते हैं और वहाँ बातचीत होता है। पर मान लीजिए कि शहर में अगर रिक्शा वाला है, वो जो रिक्शा चलाएगा उससे जुड़े हुए जो समस्या है वो शायद एरिया सभा में डिस्कशन नहीं होगा, तो इसके लिए रिक्शा वाला का भी एक संगठन है जो कि सेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। तो एरिया बेस्ड पार्टिसिपेशन और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन दोनों को उन्होंने बड़ा अच्छा ढंग से प्रयोग किया है। चंदन जी, आपकी जो सवाल है उसमें स्पेसिफिक तो मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि कौन सा एरिया है, क्या बात निकल कर आ रहा है। तो जेनेरिक बात यह है कि देखिए, अगर मैं अपनी हमें आके कोई पूछे कि आपके वार्ड में क्या होना चाहिए, ये तो मैं जरूर बता दूंगा। और बोलेंगे कि भाई आउट ऑफ 80 वार्ड्स आपके शहर, आपकी वार्ड में ही ये चीज होना चाहिए कि नहीं, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हमारे वार्ड में ही होना चाहिए। तो कभी कभी हमारी जो दृष्टिकोण है वो अपनी नेबरहुड में, अपनी वार्ड में सीमित हो जाता है, वजह कि हम पूरी शहर को देखें। तो ये जो सॉल्यूशन है ये और जो सजेशन आप मांग रहे हैं सिर्फ उसी एरियाज की लोगों से अगर मांगेंगे तो आपको हाँ ही हाँ मिलेगा, लेकिन उसी एरिया को अगर आप सिटी के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो जो जवाब मिलेगा तब आपको प्रो कॉन मिलेगा कि कौन सा एरिया में ये चीजें होना चाहिए और जो कि इवैल्यूएट किया जाए शहर की दृष्टि से। तो हम फोकस एरिया में रखेंगे, लेकिन वो एरिया तो शहर के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने की जरूरत है। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी आंसर मैं नहीं दे पाया इसका, पर प्रिंसिपल यही है कि हमें शहर का सोचना चाहिए और उस शहर के कॉन्टेक्स्ट में हम एरिया की समस्या को देखें। कई सारे समस्या जो है वो नेटवर्क है, एक जगह की समस्या नहीं है, वो पूरी शहर की समस्या है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीजों को रखें तो शायद सिटीजन्स और बेहतरीन तरीका से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सुझाव दे पाएंगे और एक तरह से जिसको कहते हैं कि इम्पार्शियल फीडबैक जो है वो शायद आ पाए। थैंक यू कौस्तुभ जी। क्लियरली हमारा एक जो चैलेंज इस सिचुएशन में है वो ये है कि इतने सारे फीडबैक हमें सिटीजन से मिल रहे हैं। हर शहर का अगर आप उदाहरण देखें तो हर शहर को बहुत फीडबैक इनपुट्स मिल रहे हैं। इसका एक भाग चैलेंज का ये है कि हम किस तरह से ढूंढें, तो आई थिंक वो सॉल्व होने लगा है, लोग फीडबैक दे रहे हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि हम सबका फीडबैक किस तरह से लें स्मार्ट सिटी के गाइडलाइन के अंतर्गत। एंड आई थिंक द फ्रेमवर्क दैट यू आर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, उसको किस तरह से इमीडिएट फ्रेमवर्क और लॉन्ग टर्म के प्लानिंग में ढाला जाए, विच इज़ ग्रेट। और ये बहुत एक्साइटिंग है कि अगर हम 6 महीने पहले देखते कि किस तरह से हम सिटीजन्स को एंगेज कर सकते, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था। आज उस प्रश्न का हाउ के जो प्रश्न हमें, हाउ डू वी डू दिस इवन बेटर, हाउ डू वी एंगेज टू अनदर लेवल इज द क्वेश्चन विच इज़ रियली फैंटास्टिक इन दिस जर्नी ऑफ द स्मार्ट सिटी। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप आए और आपने इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आप देखेंगे कि आपका जो ट्विटर फीड है आपके हैंडल पे बहुत एक्टिव रहा है, बहुत सारे प्रश्न उसमें भी आए हैं, तो ये चर्चा ऑफ कोर्स जारी रहेगी। Before we go ahead and close, I would like to share कि हमारा जो दूसरा पोल क्वेश्चन है वो पोल क्वेश्चन अब एक्टिव है। आप उसका हाईलाइटेड सेक्शन भी देखेंगे जिस स्क्रीन में आप लोग सब हमें वॉच कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर पे, अपने ही कंप्यूटर पे बैठे हैं तो ज़रूर पोल के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आप बड़े कमरे में बैठे हैं, इफ़ यू आर ऑल सिटिंग टुगेदर इन अ रूम एंड मेनी ऑफ यू आर देयर टुगेदर, आई विल रियली रिक्वेस्ट कि आप लोग एक आइडिया बनाएं कि कौन सा रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा आपको सूटेबल लगता है। इस लास्ट क्वेश्चन का फीडबैक दीजिए। ये फीडबैक हमें हमारे सेशंस, ये जो लर्निंग सेशंस हमने डिज़ाइन किए हैं, इनको और भी बेहतर करने में फ़ायदा हमें देगा ऑफ कोर्स, एंड वील कंटिन्यू टू बी ब्रिंगिंग दिस सेशंस टू यू। हमारा जो अगला सेशन है वो अगले हफ्ते 25 नवंबर को रहेगा। उसके बारे में आपको न्यूज़लेटर में डिटेल्स भी मिलेंगी। उसके अलावा MyGov से भी आपको इन्फॉर्मेशन और ईमेल आएगी कुछ नए जो स्टेप्स हैं प्लेटफॉर्म के लिए, उसके बारे में। सो वॉच आउट फॉर बोथ ऑफ दोज। जस्ट अ क्विक मोमेंट टू से अ बिग थैंक यू टू Kaustuv for joining us. Thank you very much, Kaustuv, for taking the time.
Thank you, and wish you all best luck. Best of luck. Thank you very much. Wishing all the city teams all the best as we move forward. Moving towards the completion of the smart city proposals towards the middle of December. Thank you very much for joining. Continue giving us your inputs to Twitter. We'll continue monitoring them. Look forward to seeing you next week. अगले हफ्ते मिलते हैं. Namaskar.